के शूट पे मुझे इतनी दिक्कत, इमोशनल सीन, टफ सीन सब मैंने इजीली कर लिए, बट जितना मुझे पोएट्री में होता था, सो मेरे को पोएट्री रटनी पड़ती थी एंड आई हैड टू से इट. एंड नाउ 14 years later, every single poetry I remember word by word. मेरे को आज तक नहीं भूलता वो. Chetan Bhagat, someone might feel he is a very mediocre writer, but someone like me who at 18 when I got that book, I could finish that book in one night. और उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने एक देश में पूरे यूथ को पढ़ना शुरू करवाया. 100%. We are so cool when we say, अरे फ्रांस में लोग हैं ना, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो खाली फ्रेंच में बात करते हैं, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती. बट इंडिया में आके वी आर लाइक कि अरे यार मुझे खाली हिंदी आती है तो शर्म आ रही है. नहीं. एक पॉइंट ऐसा था जब मैंने 15 खरीदी थी वो किताबें और मैंने अपनी गाड़ी में रख ली 15 किताबें. मैं जहां किसी से भी बात हो थोड़ी सी भी, आई एम लाइक ये लो तुम्हारे, ये लो तुम्हारे. नमस्कार, मेरा नाम है पथिक और किताबी केबिन्स पर आप सभी का बहुत स्वागत है. इस एपिसोड में मुझे बात करने का मौका मिला रजत बरमेचा के साथ. फिल्म उड़ान, कच्चे नींबू और हे प्रभु जैसी सीरीज के साथ हम रजत के काम से वाकिफ हैं. इस वीडियो में हमने खूब सारी बातें करी, उनकी यात्राओं के किस्से, अनुभव, इसी के साथ साथ लोगों को, काम को और जीवन को देखने का उनका नजरिया, और साथ ही में किताबें, फिल्में, पोइट्री, म्यूजिक, इन सभी आयामों पर हमारी बातचीत हुई है. वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि हमने ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करने के पूरे प्रयास किए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसी के साथ आप सबटाइटल्स भी ऑन कर लें. तो आइए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं. नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और किताबी केबिन्स पर आज हमारे साथ है रजत. रजत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की बातचीत के लिए. थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले, जैसे कि हम किताबी केबिन्स पर हैं, तो हम किताबों से ही बात शुरू करते हैं. और आप ये बताइए, किताबों के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा, या फिर वो पहली मेमोरी जो लिटरेचर के साथ बनी हो? या मैं बहुत लेट लाइफ में, एक होता है ना, लाइक आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बचपन से माँ बाप ने किताबें दी है. I was not that kid. मेरे घर वालों ने, in fact I think it's the other way around. Now when I started reading more, मैं अपने पेरेंट्स को रेकमेंड करता हूँ किताबें कि आपको ये पढ़ना चाहिए, and whatever I see their personality fit. But मेरे को बचपन से नहीं दी गई थी किताबें. I never as a kid was into any of the books or novels. स्कूल की किताबें भी hardly जितना हो पाता था. But then I remember unfortunately or fortunately, I don't know, the first ever book I read was a book by Chetan Bhagat called 5 Point Someone or One Night at a Call Center, one of these two. 2007 में मैं बॉम्बे आया था पहली बार एंड मैं एक्टिंग के लिए आई केम टू बॉम्बे. एंड उस वक्त पे होता है ना कि नया नया तुम्हें पता चलता है कि किताबें भी पढ़नी चाहिए, एंड यू नो यू कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक, यू नो, अरे मैंने ये किताब पढ़ी तो यू आल्सो वांट टू. सो उस टाइम पे आई थिंक उस टाइम वो आई थी किताब, या समवन गिव इट टू मी एंड आई फिनिश्ड इट इन वन नाइट. मैं रात को पढ़ना शुरू किया, सुबह तक खत्म. बट आई एम सो ग्लैड, ऑल्सो थैंकफुल टू दैट बुक, बिकॉज दैट बुक इंट्रोड्यूस्ड मी टू व्हाट इट इज टू रीड अ बुक. सो अभी मैंने उसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें भी पढ़ी है, बट आई थिंक इट स्टार्टेड विद दैट बुक. सो आई ऑलवेज बी थैंकफुल कि वो, बिकॉज यू नो जब आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा होता है, सो आई थिंक द फर्स्ट बुक यू रीड, यू जस्ट, तुम्हें तो मजा ही आ रहा है. मेरे लिए वो कहानी चल रही थी. आई स्टिल, like, you know, till today I can't read a self help book when it's like, you know, when it becomes कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, like when it becomes like, as an actor also I'm not that person. It's an art form, you flow with it. You can't tell me like point marks of ये करना चाहिए, उससे ये ब्रीदिंग होगी, फिर ये ब्रीदिंग से ये इमोशन आएगा, फिर ये इमोशन आपकी आंखों में ऐसा दिखना चाहिए, बॉडी में. I can't function like that. When I'm performing, I perform. And then everything, वो जो आंख जहाँ होनी चाहिए, हाथ जहाँ होना चाहिए, वो अपने आप होता है. There's no right and wrong, but this works for me. So even with books, I can't read books where they tell you कि law of attraction ये है, आपको ये करना चाहिए लाइफ में, this is the science behind. मेरे से होता नहीं है. I still like books which has a story, which has a flow, and I read better. So it's a personal choice. But then since then, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया है. Now it's been, I don't know, 14-15 years. I would not call myself today also a hardcore reader, because it's not like I read every day, but then I love to read. So any trip
I will definitely have, even every day, even when I'm going for a shoot, I have a book in my bag every single day. So yeah, that is my level right now. सही है. और जो आपने शुरुआत में बात करी कि चेतन भगत से शुरुआत हुई, हम अक्सर ये बात करते हैं कि भले हम उनकी राइटिंग को या उस किताब के जॉनर को थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर उनका सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने एक देश में पूरे यूथ को पढ़ना शुरू करवाया. 100%. तो उस चीज का तो पूरा हम उन्हें क्रेडिट दे ही सकते हैं. And I still believe कि like someone who's hardcore into reading, they can be very critical of someone's work or someone's work they can appreciate. मुझे ऐसे लगता है कि there's like अभी in fact परसों ही a friend of mine told me a very very interesting thing which I love कि वाहियात कुछ नहीं होता. There's an audience for everything. And अगर मेरी वो audience है तो मेरी audience के लिए मैं अच्छा हूँ. Now someone might find me a good actor, someone might find me an average actor, someone might find me a bad actor. But जो मुझे अच्छा मानते हैं उनके लिए मैं अच्छा हूँ. So इसलिए same with a book. Like if Chetan Bhagat, someone might feel he is a very mediocre writer, but someone like me who at 18 when I got that book, I could finish that book in one night. So for me that was like very very interesting. So I think there's an audience for everything. There's no, and what rightly said, कि that one writer got so many people introduced to reading. So I think even today when I read a book, I know that it started with that book. और आपने बीच में ट्रैवलिंग की बात करी, तो हम उस पे तो थोड़ी देर बाद जाएंगे ही कि आपसे वो रिकमेंडेशंस लेंगे. पर ट्रैवलॉग्स पे अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है या फिर कोई ऐसी किताब की कहानी जो आपने प्रवास के दरमियान वो किताब पढ़ी हो और आपके साथ रह गई हो, उस पे थोड़ी बात करते हैं. I'm ashamed to say this, but प्रवास क्या होता है? Traveling. Journey. अच्छा हाँ, तो ये मेरे को वर्ड ही पहली बार सुना है मैंने. Like मेरे को ये वर्ड ही नहीं पता था. I'm very very impressed क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है. Like I know कि मेरी हिंदी में डिक्शन ठीक है, मुझे हिंदी अच्छे से आती है, बट फिर भी मेरे को प्रवास वर्ड मैंने पहली बार सुना है, मैंने नहीं सुना. So but anyway, मैंने ट्रैवलिंग के टाइम a lot of books मैंने एक कोई भी कंट्री या कोई भी ट्रिप होता है तो मैं एक किताब पकड़ता हूँ एंड वो किताब हमेशा मुझे उस ट्रिप की याद दिलाता है. सो लाइक आई रिमेम्बर, आई डिस्टिंक्टिवली रिमेम्बर कि भूटान जब मैं गया था तब मैंने इकिगाई पढ़ी थी. सो एज सून एज आई रीड इकिगाई और आई सी इकिगाई, लाइक इंस्टेंटली like makes me think of Bhutan trip. But there is one book which made me travel. Like that is the reason that I started traveling. Was a book and a film called Into the Wild. So Into the Wild, I think I don't remember if I saw I think I saw the film first and then मैंने किताब पढ़ी उसी वक्त. And very few times that you feel कि एक movie और एक किताब, वरना हमेशा होता है ना कि अरे the book was better. It's always that, like it's 99%. That is one book and one film. I feel Sean Penn did such a wonderful job with that film. He directed the film, Sean Penn. Book और film दोनों मुझे equally पसंद है. And that film and that book is the reason that I started backpacking in 2015, I think 16. And मैंने वो film देखी and I was like, I was mind blown. I have 2 tattoos of that film. Like I was that inspired. And tattoos की अलग ही कहानी है. Like that I will tell you eventually. If not in this conversation, at some point I will tell you. But I saw that film, I read that book, and the good part about that book is कि book में there's so much more that's written, which is a nicer, like at some point he worked in a McDonald's, and then at the end there's a thing about his sister visiting. So वो बहुत सारी चीजें book में better detailed explanation है. But otherwise, yeah, it's Into the Wild, which made me want to travel. And then now it's been, I don't know, 6, 7, 8 years, whatever, I am still traveling. तो आपकी next trip कौन सी और कौन सी किताब साथ में है? Funny, because कल परसों ही I was talking to a friend and मैंने उनको बोला मेरे को किताब recommend करो because मेरी next trip 2 दिन में शुरू हो रही है. So for my New Year's, I try to travel for my birthdays and New Year's. मेरे को like I don't like being in Bombay. So अभी I'm going to Paris. I've never been to Paris before. For Udaan, we had gone to Cannes Film Festival. But then उस time पे मैं इतना young और इतना नया था कि I never traveled. वरना Cannes Film Festival से I could have just extended my trip and just traveled around Europe or France.
but उस time पे मैंने कुछ नहीं किया. I just like a अच्छा बच्चा came back home. So now finally after 13 years I get to go back to France and मेरा New Year's Paris में होने वाला है. And the book I've been asked to read. In fact, एक मैंने अभी 2 दिन पहले I don't know I saw an Instagram some 5 books you should read once और वैसे वाले पोस्ट आते ना, तो उसमें किसी ने तो मुझे Before I Saw You करके बुक रेकमेंड की. And then another friend of mine, Elif Shafaq की, there's some book which I don't remember the name, Trees करके उसका नाम है, like something of trees or something like that. So that book I've been asked to read. So इन दोनों में से एक मैं लेके जाऊंगा. और उसके अलावा I always carry like a couple of books which are my favorite. तो वो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ. So either when I don't like anything, I just go back to those books. Or if I find someone who I have a good conversation with, and suddenly we start talking about, you know, I love that book, and they're like, oh, I would love to read, and I'm like, I have fun. Take this. So I always carry a couple of extra books to give people. So वो तो होने ही वाली है मेरे पास. सही उन राइटर्स पे बात करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा है. निर्मल वर्मा एक हिंदी के राइटर है. मैं हमेशा उनकी किताबें, चाहे मैं कोई भी किताब पढ़ रहा हूँ, पैरेलली उनका जो लेखन है वो पढ़ता ही रहता हूँ, रिपीटेडली भी हो फिर भी. तो मेरे लिए वो राइटर है निर्मल वर्मा. आपके कौन है? मेरे लिए आई डोंट नो इफ राइटर है या नहीं है. मेरे लिए 2-4 किताबें हैं जो मैं, जैसे अभी Alchemist है, like it's a very cliche, everyone loves it, it's a very famous book, but then that's one book जो I feel मैं तीसरी बार या चौथी बार पढ़ रहा हूँ अभी. Right now also I'm reading it. I very strongly believe कि it's not the book you try to find, it's the book that finds you at the right time. So you know, like Catcher in the Rye. Catcher in the Rye was a book जो मुझे विक्रमादित्य मोटवानी who directed Udaan. So विक्रम ने मुझे उड़ान से पहले दी थी कि ये पढ़ो किताब. उस टाइम पे मैं पढ़ता ही नहीं था. So I just kept that book. I like किताब मैं नहीं पढ़ रहा. And then like literally 13 years down the line, like अभी last year I finally found that book and I like अरे ये विक्रम ने दी थी, and I started reading and I just fell in love with that book. So I think it's just the book that finds you at the right time. Similarly, like now The Alchemist, और there's a book called The Siddhartha. एक पॉइंट ऐसा था जब मैंने 15 खरीदी थी वो किताबें और मैंने अपनी गाड़ी में रख ली 15 किताबें. मैं जहां किसी से भी बात हो थोड़ी सी भी, I'm like ये लो तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए. अभी भी मेरे पास. And also with Siddhartha, you know, I loved everywhere I went, I found a new cover of that book. तो मैंने एक वो भी आदत बना ली कि जहां पे भी मुझे नया कवर दिख जाता था सिद्धार्था का, तो मेरे पास 7 या 8 कवर तो ऑलरेडी हैं अभी. So जहां पे भी wherever I go, and very rarely that I go to a bookstore and I come out empty. मैं एक किताब तो ले ही लूंगा वहां से. So Siddhartha की I have at least 7-8 covers जो I don't give it to anyone, and I don't give my books to anyone. If you ask me for a book, I will buy a new copy, give it to you, but I'm not going to give you my copy. It's because I know वो नहीं आएगी वापस, and जब तक नहीं आएगी वो मेरे मन में भी लगा रहेगा अरे मैंने उसको किताब दी थी वो. So it's not come back. So I don't like giving my books. But Alchemist, Siddhartha, and there's a book called Tuesdays with Morrie. So these 3 books तो मैं बहुत बार पढ़ता हूँ, and I can anytime go back to those books. Paulo Coelho की मैंने काफी किताबें पढ़ी है, and I like his simplicity in writing, and he talks about something deeper. Any of his book like Hippie करके एक किताब आई थी, which didn't become very popular, one of his book, but then मुझे उसमें भी मजा आया था because it was the story of when he was young, वो नेपाल से he sat in a bus to travel around as a backpacker, and because I backpack मुझे उसमें सब में मजा आ रहा था पढ़ के, because he writes spirituality and travel together, which I personally connected with. Even 40 Rules of Love I really liked. I don't go back to it all the time, but I read it once. वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मैंने अभी रिसेंटली बायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बैक टू बैक 3 बायोग्राफीज पढ़ी. मैथ्यू पेरी की जो बुक आई है फ्रेंड्स एंड समथिंग वैसा था. So वो, and this is like I finished it almost like month and a half before he passed away. So मेरे लिए when he passed away, for me everything was so fresh because I just come out of his life journey. For me when I read it that day, I was a little disoriented because I was personally very invested in his life story. So that's one book I read. I found it fun. I think it was and if you like Friends and if you've been a fan, I think you would personally really connect with that book. Then I read Green Lights, Matthew McConaughey का biography.
So that again, a very spiritual guy, very interestingly he talks about the certain things. So that was also pretty nice. And third, मैंने पीयूष मिश्रा की जो अभी किताब आई है, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा. So वो भी मुझे लगता है बहुत interesting है. And he talks about his theatre days and all of that. So मैंने वो पढ़ी और मैंने बहुत sadly कम लाइफ में हिंदी किताबें पढ़ी है. जो when you spoke about your favorite author अभी हिंदी के, तो मुझे वही शर्म आ रही थी कि यार मैं हिंदी की इतनी नहीं पढ़ी, जबकि मेरी हिंदी ठीक है, मैं हिंदी बहुत तेज इंग्लिश के जैसे ही तेज पढ़ सकता हूँ, बट मैंने फिर भी कम पढ़ी है. सो आई एम गोइंग टू टेक सजेशंस फ्रॉम यू आल्सो कि हिंदी की कौन सी मुझे पढ़नी चाहिए. दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट बुक, हिंदी बुक. मेरे पास गुलजार साहब की 2-4 किताबें हैं जो ऑन एंड ऑफ तुम पढ़ते हो, बट ऐसे फ्लो में मैंने कभी नहीं पढ़ी. So I will take that those recommendations from you. किताब भी आपको देंगे. अरे perfect. पर क्योंकि आपने गुलजार साहब की बात करी और उसके जस्ट पहले सिद्धार्थ की भी बात करी थी, तो शायद से उनकी किताब है रात पश्मीने की, कविता संग्रह है उनका. उसमें बहुत सुंदर कविता है जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लोर किया है कि जब सिद्धार्थ वापस लौटते हैं तब उनकी ऐसे वो माइंडसेट क्या रहा होगा या तब वो साइकी में क्या चल रहा होगा. सो जस्ट यही मुझे आपने, क्योंकि सिद्धार्थ भी कहा था और गुलजार साहब भी कहा था, दोनों को ऐसे कनेक्ट करके जो एक पॉइंट था वो याद आ गया. मेरे पास ये किताब है, मेरे को किसी ने गिफ्ट की है ये किताब. तो उसमें आपको ये कविता मिलेगी. सो अभी ये खत्म होगा तभी आप मेरे को दिखाना. बिल्कुल. तो ये कुछ बातें हुई इस पे. और हाँ, पोएट्री पढ़ते हो आप? पोएट्री मैं पढ़ता हूँ, थोड़ी लिखता हूँ, बट ऑल वेरी बेसिक. मतलब बेसिक इन द सेंस कि आई डोंट पुट दोज पोएट्री आउट एनीवेयर. एंड मेरा पोएट्री से कनेक्शन स्टार्टेड बिकॉज ऑफ उड़ान. उससे पहले तो मैंने जिंदगी में कुछ नहीं लिखा था. आई थिंक उड़ान वाज माय जर्नी टू इवन कम टू अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड सिटिंग विद माई सेल्फ. हम इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है एज लाइक, I think we are so busy, and as kids, I don't know, अपनी वाली like when I was 18, which is like years back, उस टाइम पे तो बहुत कम बातें होती थी about you know. अभी तो it's like self love has become like a big deal. उस point पे I don't think we spoke so much about it. So मैं अकेला ऐसे कभी नहीं बैठता था. I was always with people, with my cousins, with my family, with someone. So I think उड़ान में विक्रम wanted me to feel lonely, feel what Rohan was feeling as my character was feeling. So I think that introduced me to the world of sitting with myself. And obviously उस point पे ऐसा नहीं हुआ. उस point पे तो मैं इतनी घटिया poetry लिखी है, if I read that to you, and also for girls. उस time पे मुझे कोई लड़की अच्छी लगती थी, मैं उसके लिए, and वो कैसे होता है ना, when you start writing you rhyme. तो मैंने करना का भरना कर दिया, भरना का डरना कर दिया, like तुम rhyme करके लिखे जा रहे हो. So I used to write poetry like that, but I think that was my introduction to it. And now over the years, I have friends who are beautiful writers and they write like really nice poetry. So it's nice when we all sit together. Sometimes we write our own things, or sometimes when I'm like, now I love spending time with myself. So there are times from 7 बजे सुबह वापस आना to रात को 11 बजे सो जाना. I've come to that journey. So now, you know, when I sit कमरे में अकेले, so there are times, or you know my cafe, so कभी मैं कैफे पे अकेला हूँ, लोग नहीं है, so then I write things. मुझे मजा आता है. मैं पढ़ता अभी भी इतना नहीं हूँ. I don't think I read a lot of poetry, which also I think I learn more if I read more. तो वो भी मुझे पढ़ना चाहिए, but मैंने पढ़ा कम है. but मेरे को जो उस मोमेंट में फील हो रहा होता है, I just write once in a while. क्योंकि हम पोएट्री की बात कर रहे हैं और उड़ान की भी साथ में बात हो रही है, ये मेरा मोमेंट है. मुझे आपके साथ बैठा हो तो मैं एड्रेस करके ही रहूंगा, मैं सोच के आया था जहां मौका मिलेगा. तो मोटू मास्टर, ये जो गाना है आपकी फिल्म में, वो मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि अगर मैं कभी हाइपोथेटिकली अगर मुझे मौका मिले कि मैं पोएट्री पढ़ाने जाऊं, कि ये एक लेक्चर है जिसमें हम मॉडर्न पोएट्री के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो मैं मोटू मास्टर का एग्जांपल वहां पर रखूंगा कि ये देखो क्या क्रिएटिव राइटिंग है, क्या पोएट्री है. और उसमें भी वो अनुराग कश्यप वाला जो पार्ट है, हर बाल के खाल की छाल खा जाए, और उसका आखिरी वाक्य ये है कि अगर परोसा जा सकता तो ख्याल भी खा जाए. वो इतनी ज्यादा सुंदर कविता है कि मैं उसे मैंने 2-3 साल पहले एक एपिसोड किया था उड़ान के गाने पर, तो तब जाके मैंने एक्सप्लोर किया कि ये कितनी डेप्थ है इस गाने में, मोटू मास्टर में. And that is one song which is so different from the entire album. उड़ान का एल्बम is
कहानी खत्म है या शुरुआत होने को है, now and Geet and all of those songs, and suddenly there's a Motu Master which is completely and also that's like Anurag. I think there's no one who can write like that अगर अनुराग नहीं होता. So I think वो हर बाल की खाल की छाल भी खा जाए. So I think that's just his genius. He's written it so beautifully. And the funny thing is, पूरे उड़ान के शूट पे मुझे इतनी दिक्कत परफॉर्म करने में, इमोशनल सीन, टफ सीन सब मैंने इजीली कर लिए, बट जितना मुझे पोएट्री में होता था, क्योंकि पोएट्री देयर वर सीन्स और पोएट्रीज व्हिच विक्रम वांटेड की पूरा एक फ्लो में करते हैं, मुझे फ्लो नहीं याद होता. आई लाइक मैं बिकॉज सीन्स में यू कैन इम्प्रोवाइज, एक वर्ड इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया. पोएट्री में यू कांट डू दैट. सो मेरे को पोएट्री रटनी पड़ती थी एंड आई हैव टू से इट. एंड नाउ I don't know what, 13-14 years later, every single poetry I remember word by word. मेरे को आज तक नहीं भूलता वो. और उस टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत उड़ान की पोएट्री याद करने में हुई. But yeah, I think poetry was, and also I think I got introduced to poetry, and a lot of people who follow me, who like my work, they connect with me because of my like you know the way I recited. जबकि जिन्होंने वो पोएट्री लिखी है, बाकी पोएट्रीज जो सत्यांशु देवांशु, they were not very happy with the way I recited in the film. उनको लगता था अरे यार ये ऐसे बोल सकता था, ये ऐसे. But there was so much rawness and something I didn't know how to recite. So as a character that really worked for the character. उनके लिए उनको लगा अरे यार ये थोड़ा बेटर कर सकता था. बट आई एम श्योर मतलब सबको वो कनेक्ट तो हुआ है कि उड़ान में वो जो मोमेंट्स है जहाँ वो रिसाइटेशन होता है, दैट सीन जब वो रोनित रॉय इस तरफ से मुड़ के देखते हैं, चश्मा उन्होंने पहना हुआ है, वो so that's a different poetry, yeah. But in fact like Ronit lives in the next building यहाँ पे, and a very funny incident I'll tell you. So in Udaan, if you remember the film, Ronit makes me job, run with him. So every day we are running. Ram Kapoor, who's playing my chacha, he just waves from his house. And by the end of the film, there's a point where I say कि मैं बॉम्बे जाऊँगा and बिनॉय के रेस्टोरेंट में काम करूँगा, but मैं आपके पास नहीं रहूँगा, whatever. And now, cut to 30 years later, I have a cafe here. And there have been times when Ronit has jogged past my cafe and he just waves if he looks at me. So I think that's just such a full cycle that completes here. It's amazing. And also I think abhi 13 years of Udaan ke liye we made some fun video, Ronit and I, we caught up and so yeah, I'm in touch with those guys. I think now everyone I work with, somewhere it becomes like a professional thing. Udaan was all like, it was all ours. They were all like a part of a big family. We all came together. So क्योंकि हम गानों पे बात कर ही रहे हैं, म्यूजिक में आपको किस तरह से सुनना पसंद, मतलब आप म्यूजिक पर फोकस रखते हो या लिरिक्स पर भी फोकस जाता है आपका, ऐसे नेचुरल क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली अभी के बहुत कम गाने होते हैं, यू नो, लिरिक्स पे फोकस तब जाता है जब कुछ ऐसा सुन लिया है, निकल है कितना सही लिखा है उसने, क्या सही लिखा है. एंड अदरवाइज तुम गाना सुनते हो, एंड अभी मुझे लगता है बहुत कम गाने ऐसे आते हैं जो तुम वो 10 दिन में सुन रहा हूँ, 10 दिन में 10 बार सुन रहा हूँ वो गाना, बट 11वें दिन then I move on and I'm like not thinking much about that song. I still listen to a lot of पुराने गाने. तो जैसे आज ही मैं रोजा का जो गाना है, जो ओरिजिनल है, मैं वो सुन रहा था. उस टाइम पे जो लिरिक्स होते थे, that I still focus on. जब वो सुनते हैं, इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है ऋत्विक धंजा, सो ऋत्विक और मैं अभी एक दिन बीकेसी से वापस यहाँ आ रहे थे एंड रास्ते में हम पुराने गाने सुन रहे हैं और हम एवरी सिंगल लाइन वी आर लाइक क्या लिखा है यार, क्या लिखा है यार. सो देयर यू फोकस मोर ऑन द लिरिक्स, बट अदरवाइज अभी के जो गाने होते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं. देयर आर सॉन्ग्स, अभी मेरे को ऐसे टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं आएंगे, बट रिसेंटली आल्सो लाइक देयर हैव बीन सम सॉन्ग्स व्हिच लाइक आई थिंक अमिताभ भट्टाचार्य, सर्टेन थिंग्स ही राइट्स व्हिच इज लाइक यार बंदा कैसे सोच रहा है ये. So, of course, like there are lyrics like that, but then majorly now abhi it's a reel pe hit ho jaye. Every song they plan a particular segment jo reel pe chalna chahiye and all of that, which is sad. Like I know it works for them, gives them a lot of money, lot of hits, but वो नहीं है. मेरे कैफे पे भी if you've seen वो सारेगामा का कारवा जो होता है ना जिसमें पुराने गाने चलते हैं, वो चलता है because I love that vibe.
like around. I don't want कि अभी के गाने चल रहे हैं. Results सुनते हो आप? मैं सुन सब लेता हूँ. मैं ऐसे I won't call myself just चैंग है मेरा दोस्त, शिल्पा राव है, श्रुति पाठक है, इन सबको नॉलेज है इन चीजों की. मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट जब चल रहे होते हैं तो मुझे बहुत मजा आ रहा होता है. I really vibe with them, I really enjoy it. बट अगर आप मुझे बोलोगे कि अरे उनकी कौन सी गजल पसंद है, वो मुझे इतना नॉलेज नहीं है. तो मैं कभी कभी रैंडम अगर चल रहे हैं, I play like music on the loop, रैंडम कुछ ना कुछ चल रहा है, सो बीच बीच में चलता रहता है. अभी तो मेरा बहुत वियर्ड प्लेलिस्ट है. So suddenly like it can also be a Bruno Mars, they can be a Italian band एक है Måneskin, जिनका वो आया था I'm begging you. So वो वाला गाना भी चलेगा. And suddenly नुसरत फतेह अली खान का एक गाना चलेगा. Suddenly तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वो भी चलेगा. So like my playlist is so bizarre. People who sit in my car, they're like भाई किस जोन में रहे हम. मुझे मजा भी आ रहा था उसमें कि I'm like vibing on a song. Suddenly I go into अली सेठी का. तो ऐसा कुछ ना कुछ मिक्स होता रहता. मुझे बहुत मजा आ रहा था उसमें. I got introduced to एक मेरे कैफे में. There's this guy who comes. His name is Mohammed Muneen, and he has a band called Alif. वो था ना लिल फ्ली टाइप का कुछ तो कोई एक होता है बीकेसी में स्पोकन फेस्ट या something happened जहाँ पे Muneen perform. I was standing. Suddenly there were a lot of people. They were like कि अरे you know this Kashmiri band and it's beautiful. And मैंने कहा ठीक है चलो खड़े होते हैं. और बहुत भीड़ हो गई थी. And suddenly Muneen appears on screen. ये तो मेरे कैफे पे आता है. So suddenly like you know that's how I explored him. But then I heard his music and there's so much soul to his music. So he's one. If you've not heard, I think Alif is a great sound. And उसके अलावा तो मैं अरिजीत सिंह भी सुनता हूँ. मैं सब सुन लेता हूँ. मुझे उनकी तरफ से बहुत ही जरूरी एडवाइस मिली थी मोहम्मद मुनीन की तरफ से. जब मैं ऐसे इनिशियली जस्ट ऐसे लिखना शुरू किया था और मुझे भी लगा था क्या कचरा लिख रहा हूँ. तो मेरी उनसे बात हुई थी इस बारे में कि मेरी पोएट्री बहुत खराब है, क्या कर सकते हैं इसको लेके. तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप बहुत समय तक किसी घर को बंद रखते हो और उसकी टंकी में पानी पड़ा रहता है, फिर थोड़े समय बाद जब आप वापस आते हो और पानी के लिए जब नल खोलते हो तो पहले सालों से पड़े हुए पानी का कचरा बहता है उसमें से. पर जरूरी बात यह है कि बहने दो तो साफ पानी आएगा. और उस वक्त मेरे लिए ये एडवाइस इतना काम कर रही थी कि मुझे फेथ रही कि नहीं लिखना चालू रख सकते हैं. ये ब्राउन पानी निकलने फिर साफ पानी आएगा. बट यू नो लाइक इन माय लाइफ आई लव hanging out with people, listening to people, watching people, reading people, where I feel this. Like you're talking about this thing makes me think कि यार कितना सही सोचा है यार इंसान ने. Like you know these thoughts, they're so nice when, and obviously you are a person, you have a certain thinking, but there are so many other people who think so differently, but you connect with them so hard that you're like, dude. And I also am a big believer of that. आपको जिस पॉइंट पे लाइफ में जिस तरह का नॉलेज आना है वो आपको कोई किताब से आ जाएगा, कोई गाने से आ जाएगा, कोई पिक्चर से आ जाएगा. या टुडे यू टॉकिंग टू मी एंड टेलिंग मी समथिंग might give me that knowledge. So I think that knowledge comes to you no matter what you want that knowledge, you don't want that knowledge, it will come to you. If you're open to it, it will come nicely and like ज़्यादा खुल के आएगा वो. So yeah, it's great what he said. I think it's such a nice thought. मुझे उनकी फिलॉसफी काफी पसंद आ रही है कि चीजों को होने दो, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और होते होते सही वक्त पर वो चीज होती जाएगी. किताब में आपने ये कहा कि किताब आपको चुनती है. नॉलेज में भी आपने कहा कि वो सही समय पर आपके पास आएगा. इसके पीछे कुछ है, ये थॉट्स कैसे डेवलप हुए, या जो आपने स्पिरिचुअलिटी के बीच में मेंशन कर रहे थे, तो कुछ कनेक्शन ऐसा है? कनेक्शन आई थिंक क्योंकि दिस इज समथिंग आई रियली बिलीव इन. मेरे को नॉलेज चाहिए, वो मैं भागता नहीं उसके पीछे. आई लाइक जस्ट बीइंग. एंड मुझे ऐसे लगता है कि एक तो बेसिक जो हम सब सुनते आ रहे हैं विच इज द ट्रूथ, इंसान अच्छे रहो, सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी ऑल काइंड ऑलवेज, ये सब हम सुनते हैं. बट इट्स सो सिंपल दैट इज actually the ultimate thing. Be a good person and then eventually be open to new people, new experiences, new knowledge. Everything will come to you. Like for me, like meditation. For the longest time people used to tell me meditate, it's very nice. मुझे नहीं समझ आता था. मुझे लगता था नहीं,
मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपना फेवरेट गाना सुन रहा हूँ, वही मेडिटेशन है, which is true. There's nothing wrong with it. But at that point in my life, maybe I was meant to get only that much out of my meditation. So मैं गाने वाला meditation में खुश था. At one point, a year and a half, 2 years back, because of a friend of mine, I got introduced to yoga. So मैंने सेंटा क्रूज ईस्ट में योगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके एक जगह है, which is like 105 साल पुराना योगा इंस्टीट्यूट. वहाँ 1 महीने का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है. 1 महीने दिन में सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे तक आप योगा सीखते हो. And because of that friend, I joined that yoga course. And because I was meant to learn so much, there was not everything that I connected there. There were things I didn't connect with it. But वहाँ पे मुझे एक चीज बहुत सही लगी, that physical yoga is just 3% of yoga. 97% of yoga is also how I am every day of my life. When I'm talking to you, when I have the biggest success in my profession, when I have the biggest low of my life, in every single situation, how I'm dealing with, or if you make me really angry, you slap me right now, how I react at that point, everything is, you can try to be calm in that sense. So I think attaining that calm is very important. मेरी लाइफ में मुझे लगता है पिछले 1.5 साल में सबसे important चीज जो सीखनी थी वो patience था. I was like, मेरे पापा ऐसे sitting inside, like very very impatient. He always wants things like अरे यार वो हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ. I think patience is they say that patience is a virtue. It is such a beautiful thing, because then patience आएगा तो you can just let things flow and move around and pass by, and automatically you attract the right things. So that's how I attracted yoga. That's how, because of that, I started meditating. I had some very beautiful spiritual experiences when I was meditating. So everything just followed. उसके बाद, because of the same friend, she was going for Vipassana. So then I went for Vipassana, which I was really scared of. I was like, ये तो मैं जिंदगी में नहीं करूँगा. But I did. I had some great experiences there. Not everything I connected with, but there were certain things that I took out of that. So I think every single thing at every single point in your life, just be open to what your gut tells you. And now gut can be, and I think what you're saying, the inception of it came from when I read in 2015 The Alchemist for the first time. Usme he talks about omens. And omens are the signs which you get from universe. Now you can call it your gut feeling, you can call it भगवान की आवाज, you can call it आपके अंदर की आवाज, you can call it the sign from the universe, you can call it whatever. But it is something that you believe so strongly कि यार इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है ये सही है मेरे लिए, या ये मुझे करना चाहिए, या ये मुझे नहीं करना चाहिए. I might have never met you, but suddenly I'll meet you and I'll be like यार मुझे नहीं रहना इसके साथ. Or I might meet you and I'm like यार मुझे बहुत सही लग रहा है ये लड़का, मुझे इसके साथ ज़्यादा बात करनी है. And we all have that. When we go to a party, suddenly we don't want to stay in that party. So I think the more you start following those signs, the more you start attracting those signs, and the stronger the signs become. So I think 15 से लेके अभी 23 तक मैं यही कर रहा हूँ. I just follow all the signs. It can be as stupid as मैं ये वाला जूस पीऊँ कि ये वाला जूस पीऊँ. Literally, it can be as stupid as that. I follow my gut feeling in every single thing I do in my life. चाहे वो कोई मीटिंग है, मेरा कोई मीटिंग है जो मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं, बट मेरे को नहीं मन कर रहा, मैं नहीं कर रहा शायद. बट अगर कोई मीटिंग है, मुझे एक बार बोला, and I'm like, for some reason I might even not do the project, but I want to meet that person, and they've become my closest friends right now. So I just follow these things. सही, क्योंकि आपने जो योगा से शुरू करके अभी जो बात बताई, आई थिंक वो वहीं जाकर क्लोज होता है कि उसका 6th and 7th स्टेप जो है अष्टांग योग का, ध्यान एंड धारणा, वही आता है इंट्यूशंस के साथ. तो जो आप ओमन की बात करते हो, गट फीलिंग, वो इंट्यूशंस, तो उसमें वही फिलॉसफी आती है. टॉक टू यू अबाउट द एंटायर द जर्नी ऑफ इट. आई एम वेरी लाइक, कई बार चीजें होती है वो बहुत बेसिक होती है किसी के लिए, यार ये तो बहुत बेसिक चीज है. मैं अगर मेरे लिए वो स्पेशल है, I keep it close to my heart. कि ये मेरी special feeling है. It might not be that special or that big a deal for you. I feel it. So like for example, I just went to Turkey with my family. There I saw a shop जो आपकी आंखों का close-up 200 मेगापिक्सल में close-up फोटो खींचते हैं
and they make it into a painting, they make it into a pendant, they make it into a bracelet, कुछ करते हैं. मुझे आइडिया इतना इंटरेस्टिंग लगा कि I always, every day, and this is a thing, every single day I look in the mirror, I look at my eyes, and I see honesty in it. And I'm like, every single day I have to, when I look at myself, there should not be something I don't like. I have to like myself when I look at myself. And it's not like the physical liking. It's like I look myself in the eye, and eyes, you can't hide obviously anything. So मुझे लगा यार मैं तो आंखों से इतना like I connect with my eyes, and ये तो बहुत interesting है. So this is the bracelet, this is the pendant. So this is the close up, like 200 megapixels से photo खींच के they make it into a pendant. वहाँ लाखों लोगों ने बनाया होगा pendant. It might be a very casual touristy thing to do for them. I really connected with it. So now I keep it very close to me because मुझे लगता है कि, and also when she was clicking me, the girl, I was doing like this because I had to open my eye, and then when she clicked it, I like no, please take my picture again, because I didn't want blur in my eyes when I'm getting clear. I was like, let me have some like calm and take that picture and give it to me. So then I redid the picture and she gave it to me. Now this, I've told a couple of my friends and they're like, it can be very stupid, and for someone watching it can be like simple basic cheez hai. If I like it, I connect with it and I keep it very, it's a very sacred thing for me. Like a lot of my friends tease me कि अब शिव जी बन गया है, तो मैंने कहा शिव जी की यहाँ है मेरी, this is, they call it the heart chakra. So I'm like मेरी यहाँ है. So I have to make sure that I have more love, more calm, more peace. So, things like that I really want to keep doing because they make me happy. It's as simple as that. There might be no logic towards all these things, but then it makes me very excited in life. नहीं कहते हैं ना, आंखें तो आत्मा की खिड़कियां होती है, ऐसे तो हाँ, और 3 खिड़कियां हैं. और इस पे मतलब एक रिकमेंडेशन है जो आई एम वेरी श्योर शायद आपने देखी होगी फिल्म, और नहीं देखी तो आपको बहुत पसंद आने वाली है. आई ओरिजिन्स मैंने नहीं देखी. हाँ, तो इसकी मतलब आई, उसमें वो सेल्फ वाला आई है. हाँ. पर उसकी जो थीम है पूरी फिल्म की, और उसका जो पोस्टर है वो भी एक आंख का क्लोजअप है. हाँ. और पूरी फिल्म इसी पे चल रही है कि उसका जो एक बेसिक जो एक साइंटिस्ट है वो यही देख रहा है कि इवोल्यूशन अगर हम एकदम पीछे से ट्रैक करना और वहां से अगर हम कुछ फॉर्मूलाज निकाले, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आंख आई थी किसी भी ऐसे जीव में, और वहां से शुरुआत हुई ऐसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनने की. तो वो रिसर्च कर रहा होता है, और फिर वो कहानी उसे कहाँ ले जाती है, और कैसे कैसे कनेक्शंस बनते हैं, और उसका अंत जो आता है वो कैसे. उसमें उस फिल्म में सब कुछ है, फिलॉसफी है और स्पिरिचुअलिटी पर भी जाते हैं, एक साइंस, और फिर एक तरफ वो एस्पेक्ट जो साइंस आंसर नहीं देता, और फिर दोनों के बीच का फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ है. तो आपको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. तो आई ओरिजिन्स वो एक ये आई थिंक ये इंटरव्यू मुझे रिकमेंडेशन लेने के लिए बना है. नहीं, ये तो फिर गलत साउंड कर जाएगा. नहीं, बट ये आई ओरिजिन आई वॉच है, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. पर हाँ, क्योंकि फिल्मों की बात हुई तो चलो फिल्मों पर बात करते हैं. आपके ऐसे कौन से फिल्म रिकमेंडेशन है, सीरीज के रिकमेंडेशन है जो आप बताना चाहोगे? Into the Wild is one film because I really connected with it to a point that it made me travel, have 2 tattoos, and then I think I read an interview or saw an interview जिसमें रणबीर कपूर का था I think, and he was like I might be completely wrong with the names, but I think Ranbir Kapoor was saying कि Amir Khan once told him कि travel as much as you can when you are a little less known, because आप कर सकते हो, and gain the experiences, because eventually when you are so known that you can't step out, you won't be able to gain those experiences. तो मेरा वो phase चल रहा है. I'm not someone who can go out and get mobbed. I can comfortably travel around, like I can still enjoy. I have that privilege so far. So I think this is my time, and Into the Wild was the movie that made me go for it, pursue it. So I think that is one film. Pursuit of Happiness, so good. मेरे को तो ऐसी पिक्चर भी बहुत बढ़िया है, कुंग फू पांडा टाइप. मेरे को बहुत मजा आता है. There's philosophy, there's fun, there's like there's so much in that. Then there's an animated movie called Up, about this old couple, yes. And it is such a beautiful movie. So that is one film, so nice. And series में
Succession, I really enjoyed Succession. मेरे को बहुत मजा आया वैसे टाइप की सीरीज. Breaking Bad was the first one I saw. So it's like these are the commercial ones, but like a little like not so talked about, but not so much was Bear. Bear was so nice. I enjoyed that one. And then एक और थी Barry. It's a serial killer who goes to an acting class to kill that person, someone. But उसको acting class देख के he gets so fascinated and how he gets involved in that. उसका एक लाइफ चल रहा है कि did you kill that person type, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है मारने का, बट वन पार्ट ऑफ इट इज ही इज जस्ट लविंग द प्रोसेस, और उसको सब स्टूडेंट मान लेते हैं ना, तो ना उसके भी रिहर्सल चल रहे हैं, उसका अपना प्ले का प्रिपरेशन चल रहा है. सो आई थिंक दैट इज वन सीरीज आई रियली लाइक. बाकी मेरा ये इसमें भी सीरीज में भी मैं कुछ भी देख लेता हूँ. मेरे कुछ दोस्तों का भी शो आया था कोरा, अगेन दिस ईयर्स like one of the finest as writing, performances, very very well done show. Patal Lok was one show that I really liked, I think, and all thanks to the time we are in right now, that you can take a Jaydeep Balawat and make a big show like this. आज से 10 साल पहले कुछ नहीं होता था, like you would not put so much money in a non-star actor, but then yeah, I think Jaydeep did such a good job. So yeah, things like that I like. YouTube पर क्या देखते हैं? YouTube पे यार मेरे आधे तो मेडिटेशन के म्यूजिक चलता रहता है कुछ ना कुछ. एंड अभी मैं वो राउंड टेबल चल रहे हैं बाहर वाले वैरायटी के, वो एक्टर ऑन एक्टर, तो वो मैंने देखे. आई सॉ रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड मार्क रफलो वाला, सो वो मैंने लास्ट आई थिंक वो देखा था. एंड देन मैंने कल वो भी देखा, संदीप रेड्डी वांगा का कुछ तो आया है विद भारद्वाज रंगन. 2 घंटे 19-18 मिनट का इंटरव्यू. सो एक पिक्चर अपने आप में है वो. सो मैंने वो देखा कल. सो ऐसे मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ. बट यूट्यूब पे मैं आई थिंक इट्स मोर अबाउट, एक ऐसे भी वीडियोस आते हैं ऐसे वीडियोस आते हैं जो दे टॉक अबाउट आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हमारे लिए आपकी लाइफ में अभी ये चल रहा है. इफ यू कम टू this video, it's a sign for you to watch it. I don't watch all those videos, but there are once in a while there's a video that catches my attention, and as much as I'm a believer that this is all nonsense of ki this is meant for you, but the day I get the right energy with that video कि I know वो तो सबके लिए बोल रही है, व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रही है वो लड़की कि this is meant for you, this is supposed to be for you. I know this is all a bullshit. But sometimes this connection is so strong, once in a month, once in 2 months with a video, and like I told you, your information will come to you from any point. So sometimes when I have a very strong connection with a particular message, I also take messages from that, and that also I believe. But हर बार नहीं होता obviously, ऐसे नहीं मैं हर वीडियो ढूंढ रहा हूँ टैरो कार्ड वाली का कौन मुझे क्या कह रहा है. But once in a while I do feel connected with some video, so then I also watch those. And उनमें भी certain things I connect with, certain things I don't connect with. And also I think ये इन चीजों में spirituality में भी eventually your soul will tell you what you are. एक होता है we are trying to believe in something कि नहीं I think यार ये मेरे लिए है, I think ये मेरे लिए, ये तो मेरे बारे में. There are certain times when you actually from the bottom of your soul you know that someone is trying to tell you something. That is the information I want. Like, you know, and that is the information I'm looking out for, and that can be anything. I have to come to a point where even like randomly if I'm doubtful towards something, I talk to the universe. I'm like, भाई बताओ अभी क्या करना है लाइफ में. And then I somehow like it's touch wood, I feel it so strongly that I do get answers, and they always work for me. Like, you know, the smallest example, Udaan, how that happened to me. Before Udaan, I was auditioning obviously every day. And मैं TV serials के ads के सब audition देता था. So one day I went for an audition and I got through a TV serial. तो मेरे को TV serial का कोई audition crack हो गया. They said you're selected, come sign the contract, blah blah. मुझे लगा मैं hero बन गया. And as like new you come to Bombay, you're like now finally it's my time. I've become. तुम्हें लगता है that project is going to make you Shah Rukh Khan. Like, you know, it's as like I was 18. So and suddenly after 2 days मैं wait कर रहा था कि वो contract के लिए phone करेंगे. I called them and they said नहीं, we have retained the same cast. They were supposed to change School Boys का show था and they were changing the cast, but they said no, we've retained the same people. And I'm like,
यार रह गया. The same day or the next day or in that week, I got a call from casting people for Udaan ka audition, and I gave Udaan ka audition and I got Udaan. Had I got that project, I might have been so busy कि मैं ये audition देता ही नहीं. It could be as simple as that. So I think everything eventually leads you to the place where you are meant to be in any situation. And sometimes it's not even about us. Maybe today you have come here because you have to guide me into doing something. It can be as small as this. Like it's not always that हमारे लिए है. Anushka Sharma has that on her Instagram. At the end, we are all guiding each other home. And that's so true. Eventually, everything is so connected कि you are doing something for me, I'm doing something for her. Like everything like is interconnected. I believe in that. बिल्कुल. वो स्टीव जॉब्स की फेमस सी स्पीच है ना 2005 में, उसमें कनेक्ट द डॉट्स की बात करते हैं कि पीछे जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं. But which is so true, and that's why me and my sister we really connect because we just talk about this. And she lives in Himachal. हम हफ्ते में 5 दिन यही फोन पे, अरे पता है मेरे को आज मेडिटेशन में ये हुआ, मेरे को ये हुआ, आज मुझे ये फील हो रहा है, आज मुझे वो फील हो रहा है. We just keep talking to each other about this. पर काफी सही बात है ना कि हम इन चीजों पर कितनी कम बात करते हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. तो अगर ये हैबिट बन ही जाती है तो सबसे बेहतरीन चीज है ये. तो मतलब वो कितना सही है गलत है एक्यूरेसी की तो फिर हम बाद में देखेंगे, पर इतना एफर्ट ही करना कि मैं ये सोचूं कि अभी क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा हूँ, ये अपने आप में and it's the right people, like you know क्या कुछ तो ऐसा है ना, right you attract your tribe or whatever, like ऐसा कुछ तो है ना, you attract like-minded people. So the more you talk about these things, the more you believe in these things, you automatically suddenly you meet people, meet friends. तुम्हारे friend जो तुम्हें कभी नहीं लगा था इसमें interested होंगे, suddenly you have like 2-hour conversation about like you know what you are going through, what you're feeling. Suddenly I think it's just a magnetic thing. हमने साथ में बैठ के, I don't know if you know Gurpreet Saini करके, I have a friend, he's a writer, actor. So there have been times जब हमने घंटों बैठ के, like I go to his house, we've sat together and we've just spoken about life, and he would tell me about Faraz or someone, किसी की अचानक बीच में poetry पढ़ देंगे. So like you know things like that. I think it's a blessing to have people around who can teach you, you can teach them, and it's just like such a good exchange of energies. So हमने साथ में बैठ के कविताएं लिखी. There have been times जब हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे हैं and we're like चलो अभी क्या करें, वरना क्या होता है, like nowadays what people do is like you sit together, have a drink. हम में से मैं I don't drink, like it's very very rarely that I would drink, which I told you today. but you know one day we sat and we were like, I'm sure we are all feeling certain emotion right now. Let's all take half an hour and what we have in our head right now, write something with our thought. And that day we wrote each one of, उसमें मंजोत भी था, मंजोत सिंह. So मंजोत, मैं, I had a friend from Germany, गुरप्रीत, हम सब ने उस दिन एक कविता लिखी. So like you know you are blessed to have friends around who do these things with you. So I think it's so nice to have people like that. Travel recommendations आपके पसंदीदा जगह है? Travel का पता क्या है, मैं हमेशा I get asked this question so often. What's been your favorite trip so far? What's one place you recommend? I always have said this, and I believe that a trip or a travel like your journey is more about the people you've met on that journey. It's not, and I'm not trying to sound fancy by saying this, because I have had the most fun time on a trip which is like very normal trip. Like ऐसा नहीं है मैं कोई exotic location पे जाके मैंने कुछ अच्छा किया है. Once I was in Kerala, it's such a beautiful place. But again, that trip became so fun because of the people I met, and I travel solo like most of the time. That's also a like you know dikkat, because now I like traveling by myself more than I travel with people. 2 things I keep like you know people tell me. एक तो अरे आप एक्टर हो, आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप ट्रैवल करते रहते हो, एंड दूसरा कि अरे अकेले तो बोर हो जाएगा, क्या करेगा इंसान. दोनों का आंसर बहुत सिंपल है. एक्टर और पैसे से ट्रैवलिंग का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल. लाइक व्हेन यू आर बैकपैकिंग, यू आर नॉट लाइक आई एम नॉट स्टेइंग इन अ 5-star होटल. I get to do that when I'm shooting. When I'm traveling,
it is for the love of meeting people, love of exploring new places, having new experiences. I'm staying in a hostel. आप इंडिया की हॉस्टल्स देखोगे तो आपको 500-700-800 रुपए में पर नाइट मिल जाएगा, बाहर आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा. इट्स वेरी वेरी डूएबल. आप पहले से टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट भी सस्ती मिल सकती है. यू कैन फाइंड डील. एंड बीइंग एन एक्टर आई आल्सो डू इट. ऐसा नहीं आई डोंट लुक फॉर डील्स. आई लुक फॉर डील्स. आई गेट अ चीप टिकट. एंड secondly, it's not about where you're going, and if you're going alone, it's not like you're alone, you're lonely. Like, there's a difference between being alone and being lonely. I'm alone, but then I'm with people in the hostel. I meet new people from different parts of the world. There's so much, it's so interesting to meet people who are doing such interesting things. I met a girl from Vegas once on one of my trips. She fell sick when she was in India. And she went to a hospital where they didn't have those thermometers जो यहाँ शरीर के पास में लाते हैं और उसमें temperature दिखाता है. They had you put it under your armpit or you put it in your mouth, वैसा वाला. She was so shocked कि यहाँ पे ये नहीं है. She went back to Vegas. She started a crowdfunding campaign. She got 2000 thermometers of those thermometers, came back to India, went around small hospitals around India and distributed. You meet people like that, and then you have so much to learn from that. People are doing so much in this world, and होता है, हम we keep reading because हमारा चीजें ऐसे है कि न्यूज में हम अच्छी चीजें से ज्यादा बुरी चीजें पढ़ रहे हैं. ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है. When you're traveling, the beauty is there's so much niceness, there's so much kindness you get to first hand experience that कि दुनिया ठीक है. It's certain people who show that the world is so otherwise, you meet such. I met a guy in Goa who beach पे मुझे जानता भी नहीं, मैं बैठा था अकेला. He came, he was from Israel. He came, he gave me his passport. He said, I want to go for a dip. Can you keep this for 5 minutes? हमें तो बचपन से सिखाया, अरे दूसरे का दिया हुआ खाओ मत, किसी पे विश्वास मत करो. And the best thing that traveling teaches you is to trust people. I've had people who've gone out of their way to help me, to pay for me. I once went to the US where I didn't have change. The guy behind me paid for me. He said, it's okay, it can happen to anyone. Guy waited at one place to drop me, give me a lift, and said, you might not find a cab here, so I'll wait. You finish eating, I'll drop you back. You meet people like that, you have experiences like that, and that's why traveling is important. Because it makes you think about so much more than you already know. It makes you experience so much more than you already think you've experienced. And also, tomorrow you ask me to give a talk somewhere or have this interview. अभी मैं हर दूसरे दिन अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे पास लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. अगर आज मैंने आपको ये एक्सपीरियंस दिया है, 5 साल अगर मैं ट्रैवल करूंगा, 5 साल बाद if you take another, we have another chat like this, I will have so much more experience which I can talk about. At 25, I could not talk like this. क्योंकि मेरे पास वो था ही नहीं, 25 में मैंने ट्रैवल ही नहीं किया. So I did not have any experiences to share. And right now, with every single trip, I can tell you so much that happened. So I think trip is more about the experiences you had. I met people because of that Kerala trip, I met random people. And it's so funny, there were 2 girls and a guy. And एक का बर्थडे था 23 अप्रैल, एक का 22 अप्रैल, मेरा 24 अप्रैल. And we met in April. So we all went to Kerala together, 4 log, and then we met 10 more people in our hostel, and we rented a small boat, like a 4-bedroom boat, and हमने backwaters पे पूरा 24 hours we spent there, jumped in the lake, whatever, backwaters, cooked together, ate together, whatever, we got fishes and which we. So experiences like that makes a human being whole, I feel. वरना हम आए हैं, हमारा बहुत लिमिटेड सराउंडिंग है, लिमिटेड एक्सपीरियंस है. When we step out only we can experience more. So I feel, and पैसा इतना नहीं चाहिए. I know पैसा चाहिए, पैसा बहुत important है लाइफ में. And but ऐसा नहीं है आपको लाखों चाहिए to do it. You can have limited money and choose places which आपके पास. मैंने एक बार एक ट्रिप किया था हिमाचल में, 10 दिन का ट्रिप 12,000 रुपए में. And I'm not kidding. 12,000 I took cash, kept my wallet at home, and I said I'd keep doing these experiences. I was I will do this trip in these 12,000 rupees.
So how did I do it? I stayed in a hostel dorm. I traveled by train. I took local buses to travel. If I can do it, everyone can do it because कोई दिक्कत नहीं होती. Like people are very helpful. People even like people feed you. Like if you go to Himachal, like इतने सही लोग हैं. Everyone's gonna offer you tea. तो उनके घर जाओगे तो खाने को बोलोगे वो खुश होते हैं कि ट्रैवलर्स आए हैं, कुछ बातें करते हैं. People are so nice all around the world कि I think you have to go out and see it for yourself. मैं तो एक पॉइंट तक मैं बहुत भावनाओं में बह जाता हूँ बोलते टाइम, बट यू कैन स्टॉप मी व्हेनेवर यू वांट. पर ये कितनी सुंदर चीज है ना कि प्रवास, ट्रैवलिंग आपको ये सिखाता है कि दुनिया सच में कितनी सुंदर है, और इस बात की, इस रीअश्योरेंस की बहुत जरूरत है हमें. 100% दुनिया अच्छी है, हजारों में से वो एक बुरा होता है. अभी वो तो हर जगह हो सकता है, वो इंडिया में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है, पेरिस में भी है. पेरिस में कितनी दिल करे पेरिस मत जाओ, वहां बहुत चोरियां होती है. तो पूरा पेरिस थोड़ी बेकार है. Like it's not about a country, it's about certain people which is in every single place. बॉम्बे में भी है, वो पेरिस में भी है, हर जगह होते हैं. So yeah, I feel people are nice. I've never had a bad experience. Touch wood. I've traveled in like it's been what 15-16 से लेके 23 तक 7-8 साल से I've been backpacking. I have touch wood not have even a single bad experience in my life. You eventually go with your gut feeling. अगर आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना है ना, कहीं मुझे लग रहा है कि यार मुझे नहीं लग रहा है यहाँ मुझे जाना चाहिए, मत जाओ ना. इट्स एज सिंपल एज दैट. कोई अचानक रात को 3 बजे मेरे को कोई गली है जहाँ मुझे ऐसे अचानक डर लग रहा है, जहाँ लोग चाकू लेके खड़े हैं फॉर एग्जांपल, मैं क्यों जाऊंगा? इट्स एज सिंपल एज दैट. इफ योर गट इज टेलिंग यू नॉट टू गो समवेयर, डोंट गो. अगर मेरे को ट्रेन में किसी ने खाना दिया, मुझे लग रहा है कि मेरे को वाइब अच्छी आ रही है ना आंटी से ना अंकल से, मैं खा लूंगा. It's about trusting people. I think it's about unlearning what we've been taught as kids. कि अरे किसी से कुछ लेना मत, किसी से विश्वास मत करना. Family is the only thing. It is not. Whenever I've needed people in Bombay before my family, one call. Like recently in August, my grandfather passed away, and I found him. Like I found him in the morning, and as soon as I saw, my first call was to my best friend, and he came here in 15 minutes. The first person who helps you are your close ones, your friends. It doesn't have to be your family है कि friends है, it could be anyone. So I think those learnings we need to unlearn. जो हमें and parents ने गलत नहीं बताया था उस जमाने के हिसाब से. Today we need to be like aware about आज का जमाना, like how it is. मतलब एक तरह से देखा जाए तो भरोसा करना सिखाता है, और 100%. इतनी अच्छी वर्च्यू है अगर अपने आप में आ गई तो. बहुत बढ़िया. और कहानियां, लोगों की बात हो रही तो शायद कैफे एक जगह है इसके लिए आपके पास कि वहां से लोग मिलते हैं, कहानियां मिलती है, या कैफे का रीजन क्या था? कैफे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे लगता है. लाइक यू नो आइडिया हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर बर्मेचा हाउस, बिकॉज वन थिंग, द ओरिजिन ऑफ इट इज कि मेरी बहन और मेरी बहन का जो हस्बैंड है सुमित, उनका बीर बिलिंग हिमाचल में एक कैफे है कॉल्ड जून 16. So I used to go there pretty often, and जब कुछ नहीं है तो चलो बीच चले जाओ. And then my parents went once, and my mom got so fascinated with the working of a cafe that she came back to Bombay and she like, you know, हमें भी कैफे खोलना चाहिए. And I'm like, are you like क्या? हमारा कोई लेना देना नहीं है रेस्टोरेंट बिजनेस से. I like it's a very tough thing. You can't do it. We can't do it. We're not capable to run a restaurant. We don't know anything. She like no, we have to do it. So we like okay, क्या बॉम्बे जैसे शहर में रहना है, हिमाचल चले जाओ, वहाँ खोलो and live a good life. फ्रेश हवा है, ये है. ये like मैं पूरी अपनी जिंदगी गांव में छोटे छोटे जगहों पे रही हूँ. Finally I'm happy in Bombay. I want to have a cafe in Bombay, and my mom was so persistent that eventually my brother was walking one day. He saw this property to lease, whatever, to rent, whatever that sign. We spoke to the people, we found the property, we got some art director friends to do the place up. So we पूरा कैफे बनाया and कैफे खुल गया. And the only reason for the cafe was that mom would be happy first of all. Secondly, we wanted to create a community which is people want to come have good talk, conversations, have good coffee. We love coffee, we're obsessed with coffee. Any travel, any trip, the first thing I do is find the best cafe around जहाँ मुझे अच्छी coffee मिल जाएगी. That's my constant on every trip. So people can have good coffee, good conversation, and just have a community feel.
and it is such a beautiful and that's why I'm grateful, because that's exactly what the feel of the Barmecha house is. At least there are 15 people who become close friends. They have a WhatsApp group together. They were all solo people who met at the cafe. And day before yesterday, we had chit picking for a secret Santa. So we have a Barmecha house ka secret Santa, which is all the people who didn't know each other. There have been so many times people who don't have parents here. They're from different parts of the world, trying to acting kar rahe, singing kar rahe, kuch kar rahe, pursue. And they all come, they find so much warmth and love because my mom is there at the cafe. तो मम्मी यहाँ नहीं है तो किसी और की मम्मी से वो प्यार मिलता है. And my mom is like that. She's not a business woman ना. So suddenly if you go there, you are a regular and you're suddenly upset. She'll be like, जाके it's not like a customer वाला वो boundary. There's no wall. She'll be like, क्या हो गया? You tell me. She'll sit with the person. She'll be like, खाना खाया क्या पहले? Eat something. She's that. So it's like what she would do with me, she's doing with customers. So suddenly people are so connected with her. And my mom, उनको English नहीं आती, उनको हिंदी में बात. तो पहले she used to be conscious. And we always were like, why are you conscious कि आप हिंदुस्तान में हो, आपको अगर हिंदी नहीं आती, be ashamed of it. Or have an issue with it. अगर आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती. We are so cool when we say, अरे फ्रांस में लोग है ना, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो खाली फ्रेंच में बात करते हैं, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती. बट इंडिया में आके we are like कि अरे यार मुझे खाली हिंदी आती है तो शर्म आ रही है. नहीं. And people are so kind, so nice, because everyone who comes there, they know, तो वो हिंदी में बात करते हैं. There are times जब कोई foreigners आते हैं अगर कैफे में, तो कोई कस्टमर ही खड़ा होकर बात करके ट्रांसलेट कर देता है मम्मा के लिए. So people are like that. So that's why I'm so grateful to Barmecha House, because it's given Mama so much to look forward to, and it's given so many people a place where they can come when they have an issue. They know कि कोई ना कोई मिलेगा वहाँ पे जिससे बात हो जाएगी. So yeah, it's all blessings. कोई एक ऐसी बात जो हमने अभी तक कवर नहीं करी पर अंत में आपकी तरफ से आप ऐड करना चाहते हो, कहना चाहते हो? या मैं तो बहुत बोला, आप मेरे से पूछ लो कुछ. मैंने इतना बोला, मुझे ऐसे लगता है यार मैं इंटरव्यू के लायक नहीं हूँ. मैं इतना बोलने लग जाता हूँ when I talk. But then because also I like to say these things because I feel our generation is such कि we want to do anything that's cool. So then make kindness cool. It's cool to be kind. If you want to help someone, make a video and then show it to your friends, put it on social media. कि कई लोग कहते हैं ना, अरे help करी social media पे. I'm like, do it. At least you trying to be cool by helping someone, उसमें किसी की help तो हो रही है genuinely. So I'm like, it's fine. If I don't use, but I try to use plastic, single-use plastic as little as possible. So मैंने पिछले 7 साल में प्लास्टिक की बॉटल नहीं खरीदी है. I'm very, very particular about it. I've traveled the world, but I've not bought a single plastic bottle. There have been times when I've been thirsty for 4 hours. मुझे नहीं मिला पानी. But I've made sure I do my jugaad. I always carry my flask. Plastic is a problem. Make it cool to carry your own bottle. पहले when I was younger, मुझे ऐसे शर्म आती थी, अरे हाथ में बॉटल लेके मेरे को नहीं आता, मेरे को हाथ में पसंद नहीं है. I went to Filmfare Awards last year, जहाँ पे I had a bottle in my hand and they said कि the people at the red carpet, they like, sir, we'll hold it. I like, no, I want to have it in my hand. Make everything cool. If you're making it cool and having people do it, I think it's better because I think this generation likes to be cool. Why not? That's the right thing. So make not using plastic cool. Write about it on your social media. Show off, but at least do it. Help people do it. I think all of this, whatever I'm talking about, and that's why I like to talk about these things, कि मैं ये करता हूँ. It's not like I want to show off कि मैं ये करता हूँ. अगर मेरी वजह से even one person who says कि अरे I'll also do this, going out of your way to help someone, and then telling your friends about it. पता है आज मैंने ये किया. It's okay. Be cool in front of your friends, but at least you help that person. So I think it's such a nice thing to do that. So do it. और जिस शब्द के साथ हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी, प्रवास पर हम अटके थे, तो उसी पे एक बात कह रहा हूँ कि एक हिंदी की किताब है, रजा पब्लिकेशन से आई थी. वो भी अपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पब्लिकेशन हाउस है जिसे हमें देखना चाहिए. वो क्यूरेट करते हैं अपनी किताबें. तो उनकी एक किताब है प्रवास और प्रवास, ऐसा उसका नाम है.
और वो ट्रैवलिंग के बारे में नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन के बारे में है, एक लेखक के साथ। तो उनका जो कहना था वो ये था कि हम जब किसी से बात करते हैं वो भी अपने आप में एक जर्नी है, एक प्रवास है। तो इसलिए प्रवास से हमने शुरुआत करी थी और ये पूरी जो बातचीत हुई हमारी वो सच में ऐसे हमने लिटरल प्रवास की भी बात की और फिगरेटिवली भी एक बहुत ही सुंदर प्रवास रहा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट्स में #प्रवास लिख दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया रजत, हमारे साथ आपने वक्त निकाला, बात करी, तो और आपसे फिर मुलाकात होगी 100% with more experiences। हम दोनों और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। एंड #प्रवास, ये जब वीडियो आएगा मैं भी यही लिखूंगा #प्रवास, because this is a new word I learned. I had no idea what this word. So but thank you so much.